लेफ्ट हैंड यहाँ, राइट हैंड से ये रहा, ठीक है। और यहाँ से एक हाथ, और फिर ये हाथ घुमाया सीधा वाला, और वो जाने दिया डंडा, वो चला गया। पर यहाँ से जो दूसरा आ रहा है इसको यहाँ पकड़ लिया, ये रहा, ये हाथ में ये पकड़ लिया, जैसे पकड़ लिया इससे छोड़ दिया, इसको वापस नीचे घुमा दिया आपको, ये आया डंडा, ठीक है। ये गया, ये इससे नहीं पकड़ना, ये जाने दिया, वो नीचे से आ रहा है, वो ये यहाँ आ गया, ठीक है। ये रहा, फिर इस हाथ से छोड़ दिया लेफ्ट हैंड से, ठीक है। इसको वापस ये, फिर ये घुमाया, फिर पकड़िए, सेम मूवमेंट है, एक मूवमेंट समझिए, एक मूवमेंट, ठीक है। स्टेप वन, स्टेप वन, स्टेप वन। This is a small install.
उंगलियों से घुमा के दिखाए ना, उंगलियों से। उंगलियों से मुझे नहीं आता घुमाना उंगलियों से। अच्छा, पिछली बार जो नाई का डंडा था, मैंने उसको जब अच्छा। वो निकला हुआ था तब मैंने उसको घुमाया था क्यों?
No, I'm too tired. Okay, I'm tired. My hands too tired now. I will do try later. Tada. I hope you liked this video. If this was helpful, did it help you? Did you learn? Let me know if you learned with this technique. I try to make it easy for you because I was trying to learn it and I was finding it hard, but after some attempt from learning from other experts, I tried to dissect the technique and understand how it is really getting in momentum, how it is really started. So when I try to dissect it and make it easy, now you can see that the first step is very simple. It is just, sorry, this is just one movement. This is just one movement. Okay. And when it is end, that's your hand. Higher. This is here. This is here. Here or here. Now the next movement is this. Next movement is this. Then your right hand comes. Okay? And it is the same. Now, yeah. Okay. Hope you understood how you can spin. This is my second day to learn how to spin this, and you can see that I'm pretty good now. I can at least make some spinning, and maybe later on I can improve myself more. But now now at least I hope you can give yourself a kickstart and learn starting to spin. Bye bye.